Hello everyone, Jai Bhim and welcome to Radical Rhythms 2024. I am Mayura, your host for witnessing this incredible journey of art for resistance. We are here to raise our voice, to make our stories shine and our rhythms shake the walls of oppression. This event isn't just about performances. It is to show the world that anti-caste art is here to stay. Radical Rhythms started in 2022, centering anti-caste voices. Because when we tell our stories, we take back the power that has been stolen from us. We are here for asserting against all types of oppressions and appropriation. For us, art has been a language of dissent, resistance, moreover, survival. For centuries, Dalit community has used poetry, music, and all the forms of art to push back on the system that has been keeping us down. Guess what? We are turning the tables now. Get ready and be prepared for an incredible journey of experience, of passion, protest, and pure creative fire. In Recoil's language, only fire shit. Shijangama Collective, a group of brilliant theatre artists who use their platform for social, political, and cultural awareness. They don't just tell stories, they bring life to the struggles and triumphs of marginalized communities, challenging and motivating us to think, feel, and act. Let's watch their performance. ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಅವರು ಸುಪೀರಿಯರು ಇವರು ಇನ್ಫೀರಿಯರು ಅಂತ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಘೋಷಣೆ ಇರ್ತದೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ Cultivation of the mind is the ultimate aim of human existence.
ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಬೇಕು. ಪದ 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 ನೀದ ಪದ 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 ನೀದ. I believe in a religion that propagates liberty, equality, and fraternity. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಚಿಟ್ಟಿ ದಾಡು ಚೆಂಡು ಗೋಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮರ ಊರು ಕುಣಿಬೇಕು, ಗಾಳಿಲಿ ತೋನಿಬೇಕು, ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಅರಳ್ಬೇಕು. ಪದ 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 ನೀದ ಊರು ಕೇರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬೇರು ಕೊಂಬೆ ದೂರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಯ್ ಮರ ನೋಡ್ತದೆ, ಮರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮನ. ಓದಿ ಖ್ಯಾತ ಓದಿ ಗಿಳಿ ಮತ್ತುಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನನ. ಪದ 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 ನೀ ಮರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಒಬ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಘೋಷಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ, ಯುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ. ಯಾ 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 ಓಯ್. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assembly has to laboriously build up. Truly, their art is a movement. It was just like witnessing a theater that speaks truth to power. Raised in social movements in rural Maharashtra, she has championed social justice from India to New York. From founding a school for the displaced children to advocating for racial justice and immigrant rights. We welcome our first guest speaker, Prachi Patankar. Equality Labs for organizing this beautiful Radical Rhythms concert series that raises awareness about anti-caste cultural traditions and history from South Asia to the diaspora. From the musical, cultural, artistic, and spiritual traditions of the freedom songs sung by radical Bhakti poets of the 16th and 17th centuries to the evocative anti-caste poetry crafted by Bahujan women in rural areas through ovis, the songs sung by women that I grew up with while grinding the grain on the stone grinder wheels that would be called zatas at home or when pulling water from the well, to the rebellious Lavani songs of the Tamasha theater, the sensual, the radical resistance poetry crafted by Dalit women, to the Shahidi Jalsas that took forward the anti-caste Ambedkarite traditions, and to Arivu and Sumit Samos and Kabir Kalamanch and Caste's Collective of today's times. The traditions of anti-caste, feminist, rebellious music, culture, and art have
existed as long as the tentacles of Brahminical patriarchy have been burying down on oppressed caste communities across South Asia. The women's ovis are often on-the-spot crafted poems and rhythms. They're protest songs more than work songs. They're protest songs made to ease the workload. They're speaking out and complaining about the hard work, unhappy marriages, oppressive dominant caste people, abusive husbands, and all told with humor and sarcasm in the tradition of Bhakti poets. Poetry of all radical saints have all of this in the form of ideological and devotional angles. The Shahiri Jalsa musical traditions have merged often with the social movement, Sadak Nataks, or street theaters, seeking to revolt against Brahminism, capitalism, the data-to exploitation faced by most oppressed by the caste system. In the state of Maharashtra, the state I grew up in, anti-caste musical traditions are part of building solidarity, collective organizing, and educating to change the status quo. They're about creating and keeping alive counter-narratives about festivals, history, stories, and lives of oppressed caste people through oral traditions, because the written form, the tools to tell history and pass on history and knowledge have always been denied to oppressed caste community for centuries. This is why art and culture and anti-caste traditions have existed. From the Bhakti saints to today, all of them are freedom songs, singing about freedom dreams for the futures, representing strong collective orientation and hope for a better world, and a fight against exploiters, power holders, and oppression, often going on under the name of religion. They're also part of radical healing and creating joy, creative and joyous rebellion against casteist and patriarchal and capitalist systems, and telling about a constant urgency that is produced by this onslaught. The language is militant but loving, compassionate and nonviolent. It aims at abolishing the sorrows in human life, not just their own, but they're about collective liberation. So let's heal, let's celebrate, let's create joy, and let's create futures together while we dance. When artists of the marginalized communities take the stage, they stand tall for all those generations who have been pushed aside. And today, we are taking up that space proudly. You might have heard that art is a mirror. It reflects your life, your journey, your struggles, and victories of a community. For Bahujan artists, this reflection is their own life. माणसात माणुसकी जागवणं हेच आमचं ध्येय. And just like Dr. Ambedkar awakened a sense of humanity and justice in millions, our music and stories have slowly but steadily eroded centuries of caste-based oppression. Tonight, we don't just play music. We invoke that spirit of revolution to break the chains of oppression and silence. Let me introduce you to the next speaker, MP Sasikant Senthil, a former IAS officer now representing the Tiruvallur Lok Sabha constituency. Sir, we are truly honored to have you here. Hi. In a hierarchical society filled with oppressions and fight of the oppressed, art has always been the route in which the oppressed has expressed themselves, have found a voice in explaining their pain, and also in a way to resist the whole thing. Art has many forms, and traditionally we have seen the forms which were only in the elite circles had some kind of exposure to the world. Even today, art has been completely occupied by elitism, and the other forms of the society and the people who in fact used art as a very important tool in their lives have not been showcased. And it is very important at this stage of our history that we start recognizing these art forms. These are the original art forms. In fact, every part of them is not just replicated. You will see a lot of originality in these art forms. You can take oppressed society in any, be it the Western society or the Asian culture or any other culture. We have these kind of subaltern art forms. I'm very happy that an important concert showcasing these original art forms has been organized, and it has been there for some time from 2022. Radical Rhythms is a very essential initiative
And I think it is absolutely important that we take notice of it. Now, bringing this lyrical genius to the stage, Sonia Maq. She's not just an average teenager. At just 18 years of age, she is bringing waves to the Indian music scene. With her dynamic personality and a powerful voice, hailing from a vibrant street of Govandi, Mumbai, Sonia is just blowing the mind. Hey, let's go. Sonia Maq. हम दुश्मन से हाथ नहीं मिलाते जो दुश्मन बन जाते वो ते थाली में साथ में खाते अब समझ नहीं आता कि क्या ना क्या चाहते वो जो किया नहीं उसका सहानी में औरों का सुन फिर मार देती चाटे दो मजा ले हाथ लगा दे अब कोई भी कहती मैं खैर मजाने दो I love मजोनी मजे लो कैसी भी हेट नहीं कभी भी इन लोगों की चेहरे दो मजबूरी में दबा दे औरों की आजादी ये कहते हैं बागी मुझे छोड़कर झाको तुम खुद का गिरेबा भी है ज़मीर बेचे हुए वो लोग कहते मेरे काम पे टिप्पणी तो जाओ दो गवाही झूठी और कमा लो मुंह मांगे पैसे ये सड़क पे मार के पूछे कपड़े उस लड़की ने पहने थे कैसे ये ऐसे जाहिल बात भी करे तो नजर हो गर्दन के नीचे ये जनता से मांगे सपोर्ट ताकि चढ़ा सके जनता बली पे ये मेरा रीजन और रिलीजन सारा मीडिया चीखे अपने जो पैसे ना मिले ये सारे बिके इन्हें सबने खरीदे और मर जाएंगे बेरोजगार इनको क्या फर्क ये नंबर ही गिनते एक जान की कीमत बताओ एक और वादा ये 6 दिन के पिंजरे तू मुझसे रिश्ता ना जोड़ मुझे ये मतलब ये रिश्ते नहीं जमते अब भूख की तपिश मालूम मैं ड्राइवर की बेटी हूँ सब कुछ जम है दुख गरीबी चोट और तलवारें देखिए गले पे चलते बस थोड़ा सा फायदा दिखे फिर देख कैसे ये रिश्ते बदलते मैं ना कोई सत्यवादी ना कोई फरिश्ता जो लेगा हिसाब मैं बस एक गुनहगार या कलाकार या फिर लाजवाब हाँ मैं भी मांगती हूँ बस खुदा से जिसका ना कोई शरीक और झुका ये सर नहीं कभी भी उसके अलावा किसी के करीब वो बोले है घमंड से मैं बोलूँ है पसंद मुझे और किसी की जगह नहीं देती किसी को भी ना मेरे कर्म बढ़े वो चाहे ना कदम बढ़े तो फिर बोलेंगे आगे नहीं रास्ते हम यूं ही ना कलम घिसे तो मैं रास्ता दिखाते हैं चल साथ में कुछ अपनों में जले दिखाते नहीं भले पर पीछे खाते हैं लहजे बताते हैं सारे इरादे हम शुरू से वाकिफ ना आज से वो कहे बुरे तेरे दोस्त हम तुझ में और उनमें है अंतर देखे तुम देख रहे एक ही नमूना पर उन्होंने तुम जैसे शंबर देखे मैं करती रही साबित खुद को अब लगता जरूरी नहीं मुझे हाँ तुम्हें कहानी याद रहे ये रखनी अधूरी नहीं मुझे मैं करती रही साबित खुद को अब लगता जरूरी नहीं मुझे हाँ तुम्हें कहानी याद रहे ये रखनी अधूरी नहीं मुझे What an amazing performance by one of the youngest female rappers in India. Now, moving ahead, let us welcome our next speaker, Gogu Shamla, a Dalit feminist, activist, and writer whose work deeply explores caste and gender issues in India. She adopted Ambedkarite ideology, looking at the pervasive nature of caste discrimination. Her literary contributions like Father May Be an Elephant and Mother Only a Small Basket, but stands as a cornerstone of Telangana Dalit literature. Namaskaram. Jai Bhim to all. I am Gogu Shamla from Telangana state. I am Telugu Dalit writer. Thank you for extending the invitation to Radical Rhythms, music as an anti-caste resistant. I am honored to be part of this event. It gives me extreme joy to share this space with all my fellow speakers. I also want to thank the organizers, Equality Lab. In this important event, we would like to share history of Telugu Dalits. Telugu Dalits have special history, special music. Natural music works as language. Music works as communication in special instrument known as Dappu, Parai, Dimki instrument. Such kind of story I wrote in 2006. It's appear in Father May Be Elephant, Mother Only Small Basket. People call it music story. If I want to call some person, Jagtak, 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 Jagtak. It means, hey man, where are you? Reply is, Jagintak, Jagintak, Jagintak. I am coming, I am coming. In one kind of music, one kind of game, like hide and seek, one rhythm, Dappu says signal,
Jadabuk tak, telling other person, keep walking. Thana nan. Walk away. And jaja jagtak. It means slow down. Jag tak ning tak. Jag tak ning tak. It means take small steps. Tananana. You should walk back a little. And turned around again. Jadabuk tak. So, this game till end, it gives signals with Dappu rhythms. It's really, we can't see anywhere except in Dalit communities. It's not priority, it's not research, we can't find in the academics, we can't find in the films, but it is there in Dalit communities. And another important thing, music created by Dalits and music instrument created by Dalits. Jambudi Paneli Kirtini Ambarana Chatinolu Madigolu Mahadivalu Malolu Mahadivalu Adivalu Mahachindolu Adivalu Mahadakkalolu Adivalu Mahabainlolu. This is the song very famous in Telugu Dalit literature. And one important thing in during Dalit movement, in specifically Karamchedu massacre happened in 1985 in Ongole district. After some years, Chunduru massacre happened in the Gunturu district. Here, Dalits struggled against landlords as a poor laborer. After these massacres, Dalits started struggle against the caste dominance by the Kamma caste dominance and Reddy caste dominance in Karamchedu and Chunduru. One legendary singer and writer, Gaddar, he wrote one song that is Dalita Pululamma Karamchedu Swamulatoonu Kalabadi Nilabadi Poru Chesina Dalita Pululamma Karamchedu Kammaduralato Poru Chesina Dalita Pululamma Karamchedulo Kaladoka Palle Perura Madiga Palle Mala Sayabu Koya Vadderalaku Madiga Pallantiది శరణుగోరిన శత్రువునైనా కరుణత చూపే పేదల పల్లె మాదిగ పల్లె పేరు వింటేనే కమ్మదొరలకు వణుకు బుట్టెరా దళిత పులులమ్మ కారంచెడు కమ్మదొరలతో కలబడి నిలబడి పోరు చేసిన దళిత పులులమ్మ. We can see this shift with the stunning songs and identity politics in the history of Dalit movement. This is history navigating to new generations, and that's why so many young Dalit scholars started embrace the beating drum, embrace the Dappu culture and music as an protest against the caste dominance. We saw the Karamchedu, Chunduru and Dandora movement and Rohit Vemula movement. So many young Dalit scholars started beating drum. This is the also kind of resistance against the caste oppression. The caste system, people think it is the India confining in India only. But
rightly you said, it is now global phenomenon. So I need more and more such kind of events. Thank you, JB. In our oral history, we've always learned that our ancestors practiced matriarchal system. Siddharth's second name, Gautam, comes from his mother, Mahaprajapati Gautami. Our women were always powerful. But the enforcement of Manusmriti has stripped away this power and authority very systematically, silencing women and reinforcing patriarchal norms. The Solisai sisters, an all women rap crew, is now reclaiming this power. Their fearless music challenges caste politics, patriarchy, and social injustice. காதல் பண்ணா இங்க குத்தமா என்ன காதல் பண்ணா இங்க பாவமா என்ன எதுதான் பாவம் இங்க எது அவமானம் இங்க ஓடுற ரத்தம் எல்லாம் ஒண்ணுதானுங்க என் இருப்பு என் சிரிப்பு என் பேச்சு என் மூச்சு என் இருப்பு என் சிரிப்பு என் பேச்சு என் மூச்சு காதல் பண்ணா இங்க குத்தமா என்ன எதுதான் பாவம் இங்க எது அவமானம் இங்க ஓடுற ரத்தம் எல்லாம் ஒண்ணுதானுங்க காதல் பண்ணா இங்க குத்தமா என்ன காதல் பண்ணா இங்க பாவமா என்ன எதுதான் பாவம் இங்க எது அவமானம் இங்க ஓடுற ரத்தம் எல்லாம் ஒண்ணுதானுங்க என் கோபம் பல தலைமுறை சத்தம் தாளம் பல தலைமுறை யுத்தம் தாபம் பல தலைமுறை தாகம் துரோகம் அது அனுதினம் நடக்குது தலைமுறை மாறுது இயக்கமும் மாறல அரசது மாறுது சபங்களும் குவியுது சட்டத்தின் தேவையை எத்திடம் இருக்குது காதல் மனிதனின் சிறப்பு ஆதி தொடங்கிய நெருப்பு மோதல் பிரிவினை எதற்கு சாதி பார்த்துட்டு தூண்டுற கலவரம் எதுக்கு வலிகளை சுமத்திட்டு சத்தமா சொல்லுற நாடகம் நடத்துற நாடகம் நடத்துற 20 வருஷமா பொத்தி வளர்த்த ஒத்த புள்ள செல்ல புள்ள கதை இதை பண்ணி போட்டா கண்டப்பட்டி வெட்டி போட்டு நாடகம் நடத்துற நாடகம் 20 வருஷமா நடத்துற நாடகம் பொண்ணு தேடும் போது கேக்குறான் என ஆளுங்க பையன் பார்க்கும் போது பாக்குறான் வீடு வாசல பொண்ணு காதலிச்சா பாலினத்தை கேள்வி கேட்பான் ஒரு வயசு முன்னு உள்ளுக்குள்ள பயந்திருப்பான் தங்கமா தாங்கி வச்சு பிள்ளைங்களை பிரிக்கிறான் சாபம் விட்டுருன்னு சாமியாக மாத்துறான் ஆண்ட பெருமை என்ன மிருகம் தன்மை என்ன மக்கித்தானே போக போறோம் கடைசியில நாம இங்க தட தண்டவாளத்தில் தலைமுறை துடிக்குது கோபத்தில் வழிகளில் வடுகள் மேறிட என் தடம் அது மாறல மண்ணுல கட கரையின் ஓரத்தில் குரல் தள்ளுமண்ண சத்தங்கள் கேக்குதா பல தழும்புகள் சுமந்த மண்ணுல அடிக்கான சுமக்கிற தலைமுறை காதல் பண்ணா இங்க குத்தமா என்ன காதல் பண்ணா இங்க பாவமா என்ன எதுதான் பாவம் இங்க எது அவமானம் இங்க ஓடுற ரத்தம் எல்லாம் ஒண்ணுதானுங்க காதல் பண்ணா இங்க குத்தமா என்ன காதல் பண்ணா இங்க பாவமா என்ன எதுதான் பாவம் இங்க எது அவமானம் இங்க ஓடுற ரத்தம் எல்லாம் ஒண்ணுதானுங்க படிக்க வச்சு போட்டா காதல் கீதல் பண்ணிருவ பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சதுமே கல்யாணம் பண்ணிருவ வாய மூடி வச்சு வாழ்க்கைய தொலைச்சு போட்டு இருந்தும் இல்லாம வாழ்வதிங்க உன்னால இருப்பு ஒரு போராட்டம் என் சிரிப்பு ஒரு போராட்டம் என் பேச்சு ஒரு போராட்டம் என் மூச்சு ஒரு போராட்டம் என் இருப்பு ஒரு போராட்டம் என் சிரிப்பு ஒரு போராட்டம் என் பேச்சு ஒரு போராட்டம் என் மூச்சு ஒரு போராட்டம் Living Smile Viya, an actor, author, and a veteran Dalit trans activist. She has defied all the odds through her art and activism.
She's also the winner of Swiss Prize 2023. Hi, if you're aware of PK Rossi, and if you know, because of her caste identity, being the first actress in Kerala film industry, where is she now? We don't know. We have so many stars, so many female actresses, glamour, dark skin actress, very, very nice performative award winning actress. We all have that. And do we have a one person that you can tell, okay, this is an amazing actress, we love her, whether it's for her glamour, for her comedy, or for her talent in acting skills? But do we have one Dalit actress that we can tell now? There are even so many films that narrates Dalit story, coming from a Dalit family, coming from a Dalit household, coming from the Dalit slums, streets, livelihood, lifestyle, everything. We have it now these days, thanks to Paranjit, thanks to Mari Selvam. But do we have a Dalit actress? You have me. Hi, I'm Living Smell Vidya, and I'm an actor, author, veteran Dalit trans activist who is also an artist for 2 decades. I do theater a lot, I tried movies, I did films. The thing is, when you know how caste work, that this body, this my body, this nervous body that carries the trauma of caste from my childhood, from on stage, on screen, everywhere. Because no matter you do theater for 2 decades, no one recognize you as an actor because you're still a Dalit trans. That is their major adjectives. The noun as an actress, it's not visible yet. That will never happen in million years, I can see. I'm the a first voice from India who asked for trans reservation, horizontal reservation. I'm the first who even changed the narrative in the trans right movement, where people were focusing on ban 377, ban this, give us that, ration card, voter ID, la la la. But nobody talks about job and education and economical right. And I changed that narrative, and now it's changing, it's working, and it's going in that direction. But am I in the spot? No, because I'm a Dalit and trans. You do theater for 2 decades, but no recognition. But when a caste Hindu does some random one theater play, she will go in places. You go to America, she will do everywhere shows. Fetna invites you. But when you do 2 decades of theater, nobody give a damn. Why? Dalit. And we also need to talk about the intersectionality is not that we teach Savarna, caste Hindu women, feminist to talk about Dalit, but it's also intersectionality that we address among Dalits, how we see the women of Dalits, how we see Dalit trans men and women, how we see the artists, how we give them the light, how we give them that platform. That is more than important right now. And I think Radical Rhythm is doing that. And I know Equality Lab for a very long time, one of the very few Dalit movement that is more inclusive when it comes to not just Dalit, but also Dalit women and trans right activists. I wish you a grand success. And I just wish our performance, our poems, our books, our text, our every literature contribution is heard, it has visibility. And that's why I really appreciate you, Radical Rhythms. Kudos. Now, bringing to you some explosive talent. We have Recoil Safi, a rapper, producer, and sound engineer. Also, the one who has edited this virtual concert. So, be ready for some raw energy. Recoil Chafe made this.
डोळ्याचं स्वप्न ढगात पाय हातात कला पण नाही कमाई पैसा तो पळतो पण दमत नाही बेकासवासारखा पण जिंकून राहीन पाठीशी भाऊ बापानी आई मोजकेच मित्र ते देतील गवाई हृदयाची थांबले ठोकी तरी निया रक्त कधी थांबना छवळ नाही जीवन म्हणजे काय पेनामध्ये शाही लिहिन तर मी राहीन लिहिन तरी साई मिळत तर मी खाईन मिळत नाही तर मरण गमेन ते मी माझं विरासत नाही बाबा म्हणे संघर्ष कायम राहील काका म्हणे सिद्धी ही सोडावी नाही पाठीला नाही साडू कळत नाही मडकं थुकेन माझे बोल छाप ठेवीन पाय छाप ठेवीन कला छापेन मी नोटा छाती तर फोला चाफेनचा पोरगा चाल माझी पाकडी चारित्र सरळ 4 दिवसांसाठी चाकरी मग मरण चालणार नाही मला चालण्याची चटक चंद्र मागे काय छळ आणि कपट तुझ्या आती काय पैशाची कलम माझ्या आती काय बाबाची कलम म्हणून मला माझे जीवन गेले कसंही पण अंत आहे गोड लोक करतात पाहतात असे समुद्राच्या लाटा पण टिकली माझी ओढ लांब असे किनारा स्वप्नाचा नाही ठिकाणा कल्ल्याची फक्त ओढ मनाचा मी राजा किल्ले माझे गाणी नाव करीन इतिहासात नोंद डोळ्याचं स्वप्न ढगात पाय हातात कला पण नाही कमाई पैसा तो पळतो पण दमत नाही बेकासवासारखा पण जिंकून राहीन पाठीशी भाऊ बापानी आई मोजकेच मित्र ते देतील गवाई हृदयाची थांबले ठोकी तरी निया रक्त कधी थांबना छवळ नाही डोळ्याचं स्वप्न ढगात पाय हातात कला पण नाही कमाई पैसा तो पळतो पण दमत नाही बेकासवासारखा पण जिंकून राहीन पाठीशी भाऊ बापानी आई मोजकेच मित्र ते देतील गवाई हृदयाची थांबले ठोकी तरी निया रक्त कधी थांबना छवळ नाही एक बरं भानगडी मोजके जवळ बाकी लांब बरी एका हाताने नाही वाजत टाळी दोन्ही हात बंद वाजेल काना खाली तोंडी खास भर नाही खाण्यासाठी पण मास भरलाय राजवाणी हे मत मांडणार उंटावरी बसून नाही बुद्धीत बळपण पाहिजे राणी कमवतो आम्ही अर्धे काम करतो दुप्पट आपण रोज मरे त्याला कोरडे व्याजात राहू डुबत हे समाजतंत्र कोणी नाही स्वतंत्र उत्कर्षाचे साधन हे विशेष हक्क ना सुटका भेटत हे जातीचे बंधन गटार साफ करायला कोणाला छंद गैरवासवी खैराती लबाडी पेरमाने जरबाजी जर ख्याती अपघाती मग तर काही बैरागी धन साठवी फन्ना हाणी यांच्या नशीबात खुशीने खाईन मी दही बात पावसर का शहर में तड़ी पार अहंकार गाडीला जमिनात पण नाही म्हणा मी गरीबी पंच जमीन में तरी पी खडगा माझे फळगोड स्थिती पक्की फक्त विळंबीत पण नाही म्हणा मी गरीबी पंच जमीन में तरी पी खडगा माझे फळगोड स्थिती पक्की फक्त विळंबीत डोळ्याचं स्वप्न ढगात पाय हातात कला पण नाही कमाई पैसा तो पळतो पण दमत नाही बेकासवासारखा पण जिंकून राहीन पाठीशी भाऊ बापानी आई मोजकेच मित्र ते देतील गवाई हृदयाची थांबले ठोकी तरी निया रक्त कधी थांबना छवळ नाही डोळ्याचं स्वप्न ढगात पाय हातात कला पण नाही कमाई पैसा तो पळतो पण दमत नाही बेकासवासारखा पण जिंकून राहीन पाठीशी भाऊ बापानी आई मोजकेच मित्र ते देतील गवाई हृदयाची थांबले ठोकी तरी निया रक्त कधी थांबना छवळ नाही I am not here to entertain you. I am here to disturb you, says Samaji Bhat, a renowned folk artist from Maharashtra. His performances and plays like Shivaji Underground in Bhimnagar Mohalla, his songs for movies like Court, wherein he has blended the folk art of Maharashtra with powerful messages that talk about caste and politics. जय भीम. मी लोकशाहीर संभाजी भगत गेली सुमारे 40 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये खास करून खेडेगावांमध्ये जाऊन बाबासाहेबांचा फुल्यांचा हा विचार लँडलेस लेबरर्स यांच्यामध्ये पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. एकतर तुम्ही ज्यावेळेला अस्पृश्य बॅकग्राऊंड असलेल्या सोसायटीमध्ये येता तर मुळात तिथेच तुमचा पहिला पाया जो आहे तो खचतो. कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसतात, आर्थिक स्थैर्य नसतं, सामाजिक ऍक्सेप्टन्स सामाजिक स्वीकृती नसते कुठेही आणि त्यामुळे तुम्ही आयसोलेशन मध्ये गेलेला असता पहिलेच म्हणजे ऍज अ सोसायटी आणि ऍज अ ह्युमन बिईंग म्हणून. तर दुसरं चॅलेंज असं आहे की जग जेव्हा शिक्षित असतं, जग जेव्हा अक्षरांच्या जगामध्ये असतं तेव्हा अस्पृश्य समाज हा अशिक्षित होता. त्यामुळे जिथपासून ही अस्पृश्यता आम्हाला चिटकलेली आहे तेव्हापासून आम्ही ओरल ट्रेडिशन मध्ये आहोत. त्यामुळे आमच्या पूर्वजांनी जे काही करून ठेवलं असेल लिखित स्वरूपामध्ये आमच्याकडे काहीच आलेलं नाही आणि जो इतिहास असतो तो डिस्टॉर्टेड किंवा ब्राह्मणिकल हेजिमनी आहे. त्या ब्राह्मणिकल हेजिमनीनं तो इतिहास आम्हाला दिलेला असतो, तो खरा असतोच असं नाही.
या देशाचं जे मूळ म्युझिक आहे, ज्याला त्यांनी नंतर फोक म्हटलं, पण तेच मेन स्ट्रीम आहे. तर या मेन स्ट्रीम म्युझिकला काहीतरी एक उप म्युझिक म्हणजे त्यांचं जे अभिजात संगीत आहे ते काहीतरी प्रमुख आहे आणि त्याला जोडलेलं काहीतरी एक अपेंडिक्स आहे. हे या देशातलं सगळ्यात मोठं म्हणजे जेव्हा अस्पृश्य म्हणून तुम्ही जन्माला येता ना, तेव्हा तुम्हाला एका मोठ्या इतिहासापासून वंचित केलं जातं. आणि माझा एक अनुभव आहे 40 वर्षाचा, की जेवढं तुम्ही गाण्यातनं इझिली पोचू शकता, कारण गाणं काय करतं, तुमच्या हृदयाला पकडतं आणि नंतर तुमच्या ब्रेनकडे जातं. म्हणजे इमोशनल आणि इंटेलेक्च्युअल दोन्ही बाजूंना जे काही मेसेज आहे तो जातो. आणि म्हणून गाणं हे अत्यंत इफेक्टिव्ह आहे. गाणी पण बॅन होतात. यू कॅन शूट पीपल, यू कॅन बॅन सम लिटरेचर, बट यू कॅनॉट शूट द व्हॉइस. आता एक म्हणजे मधला जो काळ आहे, साधारणपणे 90 नंतरचा जो काळ आहे, तो संपूर्ण काळ आहे एंड ऑफ आयडियॉलॉजी. असं जागतिक हकाटी पिटलेले आहे. आयडियॉलॉजी खतम केली की डोकं खतम होतं. द ह्युमन बिईंग इज इक्वल टू डेड. आणि ती जी पिढी आहे, खास करून 95 नंतरची, तिला आयडियॉलॉजी नाही आहे. आणि त्याच्या आधीच्या पण पिढीचा प्रॉब्लेम आयडियॉलॉजीचा आहेच, कारण ती शिकवली गेलेली नाहीमुळे एंड ऑफ आयडियॉलॉजीमुळे एक जनरेशन पूर्ण गारद केलेलं आहे. तर त्यांना आंबेडकर नीट आयडियॉलॉजिकली शिकवला गेलेला नाही आहे. पण त्यातले काही लोक हे आयडियॉलॉजी शिकतील, पण म्हणून त्याला पहिलं प्रोत्साहन द्या. आणि मग हा जो उपक्रम आहे, या उपक्रमाच्या पाठीमागे मी आहे. आय सपोर्ट दिस थिंग, की जे यंग पोरांना संधी द्या आणि त्यांना हे पण सांगा की आयडियॉलॉजी सहित जा. म्हणजे फिलॉसॉफी लेस माणसं आहेत ना, त्यांना ह्युमॅनिटी नाकारते. त्यासाठी पहिलं फिलॉसॉफिकल आउटलुक जे आहे ते असायला पाहिजे. आणि ते एकदा आता असं जर प्रोत्साहन मिळालं, त्यातली काही मुलं जी आहेत ती डेफिनेटली कन्सिस्टंटली काही काम करतील, अभ्यास करतील, पुढे जातील. कमिटेड लोक असतील ना, तर ते कमिटेड लोकांना तुम्ही पुढे घेऊन जाण्यासाठी हे द्या. जे येणारे लोक आहेत त्यांना विनंती आहे माझी की बाबांनो, खरं म्युझिक तर खाली आहे, समाज तळागाळात आहे. गो टू दी मासेस, लर्न फ्रॉम दी मासेस. उद्याचा काळ हा तुमचा आहे, पण तुम्ही 2 गोष्टी विसरू नका, एक जनता आणि दुसरी आयडियॉलॉजी आणि मुक्तीचा विचार. मला तुम्ही बोलवलं या ठिकाणी, त्याबद्दल मी तुमचा अत्यंत आभारी आहे. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. We have just witnessed the power of music and words. Similarly, brushstrokes paint a picture that break all the barriers of language. Presenting to you our next performance by David, a fine artist based in Manipur. Zena hemo zo mi zo ta te gossipy ngam mi hang san sa kay may tay ni lupa de lo do kalmaya ay lo may ringi Genin pang khom tiat veni vang khopi tuang noa ulo do gal lian hong khang lai tual hong leng ta e lung lao mai ring i hiamo pan bang nem ding i hiamo teo bao mai a teo bao mai le buông lo về mong số ta do gal le sapi maya
lâu đâu ga liền hồng khăn lại tua hồng lên ta cùng lao mày đi nghĩ hiểm mô vẫn không niềm đi nghĩ hiểm theo bao mày áp theo bao mày là con lo về một dấu ta đâu có lẽ sắp đi mà lòng nghĩ lâu thế lòng nghĩ mà vẫn bị đi ngắm hi vẫn vẫn theo đến tin đi cơ lại không tung la lại biết xin ra sân lại đi theo lòng mày theo lòng mày lệ buông lâu về một dấu ta đâu có lẽ sắp đi mà lòng nghĩ lâu thế lòng hi mà lòng nghĩ lâu thế lòng hi mà Looking at this artwork, I could sense the question of displacement. Indigenous people of this land trying to search for their homes. This actually reminds me of Baba Saheb's very popular conversation with Gandhi, where he says, I have no homeland. Caste oppressed people, tribals, those who do not conform to their genders and sexualities, persons with disabilities, physical or mental. Many have to go through this trauma of being displaced. I would like to know how you look at this art piece. Please do share in the comment box. Our next speaker is Alina, a dedicated public service advocate. Passionate about community engagement, she believes in the power of learning by doing to bring change in the public sector. Jai Bhim, everybody. My name is Alina. I'm from the South Asian Dalit Adivasi Network of Canada. I'm so happy to be here today and see this very important topic happening. Thanks to Equality Labs for organizing such a wonderful radical rhythm event, as well as the amazing Dalit and anti-caste artists who are engaging here today. As a Dalit youth living in Canada, I came to know a long history of Dalit arts and culture in the South Asian community through my family. I learned that the Dalit communities for generations used art as a tool of resistance to fight against the caste system and the discrimination they face. The arts, songs, music are always a part of our daily life. If we look at the folk songs in the South Asian context, they are very deep with significant meaning as they represent our everyday life. The Dalit arts also played an important role for mental health as a therapy for centuries. Unfortunately, they are not given much importance to by the Brahminical mainstream culture, which is casteist and patriarchal. A great example of this is the Dappu or Parai. In South India, where my origin is from. I was introduced to the Parai a few years ago by my father, where I learned how to play it from a professional. I knew that the drum was seen as impure and untouchable by the dominant caste in the South Asian community, simply because it is played by Dalit people and it is their cultural art. Just a few days ago, I also learned that a Dalit family from a state in South India was socially boycotted by the dominant caste leaders in the village because their children chose to attend school instead of playing the dappu for village rituals. It's disgusting to see these kind of brutal incidents and treatments still happening in the 21st century. I strongly feel that it is important to claim our cultural roots and carry them into the future, especially when there is such a deep history of oppression, discrimination, and injustice towards our cultural practices simply because they are seen as impure and low. I am so happy to see organizations acknowledging the diverse forms of art that our culture has to offer. I hope that instead of running away from our great cultural roots, we all reclaim our history that was once left by our great ancestors who used the vibrant and anti-casteism spirit through the cultural of art, music, and dances. Thank you so much, Jai Bhim. Baba Saheb gave us the motto of educate, agitate, and organize. Along with it, he also gave us priceless Dhamma,
And in these 68 years of Dhamma Chakkapavattan, that Dhamma is now reflected in our thoughts, our lifestyle. How about reflecting this Dhamma in music and art? Presenting to you all Dhamma the band. யார் நீ யார் நான் இன்று வாணி போரே கொன்று யார் நீ யார் நான் இன்று வாணி போரே கொன்று யார் காரணங்கள் சாவோரறியார் லாபங்கள் ஆயுதங்கள் போராய் நீள வீழ்கின்ற வெடிகளுக்கு குழந்தைகள் நடுக்கம் தெரிவதில்லை நியாயங்கள் ஏதுமில்லை சிதறிய உடல்கள் சேர்வதில்லை யார் கூட்டமது கொள்ளை அடிப்போர் சுரண்டலின் காவலர்கள் சேர்ந்தே நின்றார் சட்டங்கள் வெட்கி போக வளங்களை புணர்கிறார் கூட்டமாக மனிதத்தை அழிப்பவர்க்கு ஒப்பந்த காகிதம் துடைப்பதற்கா யார் திட்டமீது அழிவில் பெருத்தோர் நிறமதம் இனவெறுப்பு கூட்டங்களாய் சேர மூலதன குவிப்புக்காக நரபலி நடக்குது தொடர்ச்சியாக வரலாற்றை கற்கவில்லை அறத்தின் விதைகள் உறங்கவில்லை யார் தந்த காயம் ஆறும் மாறும் யார் தந்த துன்பம் மாறும் மாறா விதி என்று ஒன்றுமில்லை வீழ்ந்தும் எழுவோம் மாற்றமில்லை கருணை அன்பு மனிதம் தாண்டி வெல்லும் தத்துவம் வேறு இல்லை So, okay, bye. मैं चली No, I would like to thank you all for staying till the end, for joining us at Radical Rhythms 2024. Special thanks to our speakers and all the performers. Your every note is about reclaiming the culture and breaking the chains of oppression. Let us keep uplifting each other and create a safe space where each and every voice is heard. Sending virtual Mangal Metta to you all. Jai Bhim.